कभी सोचा है पाकिस्तान जैसे कंट्री के एयर स्पेस क्लोजर का एक कैबिन क्रू की लाइफ पे क्या असर होता है? और क्या आप जानते हैं कि एक एयरलाइन को अपनी किसी भी डायरेक्ट फ्लाइट को इनडायरेक्ट करना पड़े तो उसे कितना महंगा पड़ता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कैसे एक जियोपॉलिटिकल डिसीजन एक एयरलाइन को लाखों का नुकसान करवाता है और साथ में एक कैबिन क्रू की लाइफ को अपसाइड डाउन करके रख देता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कैबिन क्रू की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को और साथ में एक एयरलाइन के ऑपरेशंस को भी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। तो चलिए पहले समझते हैं ये एयर स्पेस क्लोजर होता क्या है। हर कंट्री अपने लैंड के ऊपर का जो आसमान होता है उसे कंट्रोल करती है, जिसे उस कंट्री का एयर स्पेस बोला जाता है। कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन को इस एयर स्पेस एंटर या पास करने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो वो कंट्री उसे देती है। अब जब पाकिस्तान जैसी कंट्री अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद करती है, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी इंडियन कमर्शियल एयरलाइन का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकता। This forces airlines to take longer, diverted routes, which make them fly over the Arabian Sea और Central Asia. वैसे आपको बता देती हूँ कि अगर इंडिया से किसी एयरलाइन को यूके, यूरोप, यूएसए या कनाडा जाना है, तो द शॉर्टेस्ट रूट गोज ओवर पाकिस्तान। हेंस जब हम ये रूट नहीं ले पाते हैं ड्यू टू एयर स्पेस क्लोजर, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फ्लाइट ड्यूरेशन, फ्यूल कंजम्पशन एंड क्रू के फ्लाइंग आवर्स को, which increases the cost for an airline. Now let's talk about how this impact the cabin crew life. Normally, a direct flight from Delhi to Chicago takes around 15 hours. But पाकिस्तान एयरस्पेस क्लोजर के बाद एयरलाइंस को थोड़ा डिटोर करना पड़ता है, मतलब थोड़ा घूम के आना पड़ता है, जो 3 से 4 घंटे फ्लाइट के बढ़ा देता है। Cabin crew are already on their feet for 15 hours on ultra long haul flights. आप उसमें 3 से 4 घंटे और जोड़ दीजिए and now it starts to test both physical stamina and their mental alertness. Now let's understand this thing कि ये Boeing 777 जैसा बड़ा एयरक्राफ्ट फुल फ्यूल कैपेसिटी में भी इस लॉन्गर रूट से डायरेक्टली शिकागो नहीं जा पाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गर रूट एक एयरलाइन को मिडवे दोबारा से रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना पड़ता है। अब सोचिए, यू आर ऑन अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू शिकागो। सडनली एक अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्यू टू रूट डाइवर्जन्स वी विल बी मेकिंग एन अनस्केड्यूल्ड स्टॉप इन वियना फॉर रिफ्यूलिंग। अब समझते हैं एक कैबिन क्रू के इस सिनेरियो में टोटल ड्यूटी आवर्स को। So like all passengers, even cabin crew reports to the airport around 2 hours prior to takeoff to finish off their paperwork, signing, etc. चलिए मान लीजिए आपका डिपार्चर दिल्ली से सुबह 5 बजे का है शिकागो के लिए, तो इसका मतलब कैबिन क्रू ने एयरपोर्ट पे सुबह 3 बजे रिपोर्ट किया होगा। अब सुबह 3 बजे रिपोर्ट करने के लिए वो अपने घर से कम रात के 2 बजे तो निकला ही होगा, एंड ऑफ कोर्स 2 बजे निकलने के लिए रात के 1 बजे रेडी होना भी स्टार्ट किया होगा। सो वी कैन से टू ऑपरेट अ 5 AM फ्लाइट, a cabin crew normally starts preparing 4 hours prior to it. Now let's talk about flying time. एक नॉर्मल फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू वियना टेक्स अराउंड 8 hours. So since आपने सुबह 5 बजे टेक ऑफ किया होगा, तो उसमें 8 घंटे ऐड करेंगे तो आप दिन में 1 बजे वियना में लैंड करेंगे। So adding the flying time and preparation time of cabin crew, it has already been 12 hours now. अब सिंस आप रिफ्यूलिंग के लिए वियना में लैंड हो गए, तो एक नॉर्मल रिफ्यूलिंग को कंप्लीट करके दोबारा टेक ऑफ करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे लगता है। Mind you, nobody gets down from the aircraft in that 1 hour, and also the cabin crew is attending to all the passenger requests and are still on their toes. So adding up to 1 hour to those 12 hours, now it's already been 13 hours for the cabin crew working. Now you again take off from Vienna after 1 hour of refueling, and the time is now 2 p.m. in the afternoon. नॉर्मली एक वियना टू शिकागो फ्लाइट को अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे लगते हैं शिकागो पहुंचने में। सो नाउ लेट्स डू द मैथ्स अगेन टू अ प्रीवियस टाइम ऑफ 13 आवर्स
अब हम 10 आवर्स और ऐड कर देते हैं। एंड यस, इट्स ऑलरेडी बीन 23 आवर्स फॉर द कैबिन क्रू। बट वेट, अभी और भी है। एक कैबिन क्रू को लगभग 2 घंटे लगते हैं एयरक्राफ्ट से उतर के, अपने बैग्स कलेक्ट करके, इमिग्रेशन और कस्टम्स को क्लियर करके होटल पहुंचने में। सो नाउ लेट्स ऐड अप टू द टाइम। वी हैव 25 आवर्स ऑफ कैबिन क्रू ड्यूटी अपने घर से उठ के शिकागो होटल तक पहुंचने में। Please let me know in the comment box how many of you think if any other profession requires that much from a person. Now, some people might argue that you can't add up the time from the time they get up or they get ready at home and also the time after they sat in the cab for the airport. तो कोई बात नहीं, हम इसमें से 1 घंटे रेडी होने का शुरू के और 1 घंटे कैब से एयरपोर्ट जाने तक का हटा देते हैं. So we still have 23 hours of working time till the cabin crew reach the hotel. सीरियसली मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ उस हर कैबिन क्रू को जो ये रेगुलर बेसिस पे ये फ्लाइट्स कर रहा है एंड स्टिल कीपिंग अ स्माइल ऑन देयर फेसेस एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेफ्टी का ध्यान रखता है फॉर सच लॉन्ग आवर्स. फॉर मी एज अ पैसेंजर, एक 18 घंटे की फ्लाइट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग फ्लाइट, बट इमेजिन यू आर वर्किंग थ्रू आउट फॉर ऑलमोस्ट 23 आवर्स. That's why I always say it takes a lot to be a cabin crew. Trust me, we all know as passengers, nobody likes it to be for 17, 18 hours inside the aircraft. And trust me, even the staff and the airlines hates it even more. But few things are beyond anybody's control. ये सिर्फ physically और mentally थकाने वाला ही नहीं. It also adds operational complexity, safety checks, and more hours on the clock. चलिए अब समझते हैं कि एयरलाइन फाइनेंशियली कितना नुकसान उठाता है इस जियोपॉलिटिकल डिसीजन का. These diversions are not cheap. Longer route means more jet fuel, and fuel costs make up to 40% of an airline's operating expenses. एक एयरलाइन हर एक्स्ट्रा घंटे हवा में रहने का 10,000 से $25,000 तक खर्च करता है. Yes, it depends on the aircraft type and fuel prices, but there is also additional crew pay, since ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा पैसा, overflight fees for extra countries, increased wear and tear on the aircraft, delay penalties at destination airports, and extra airport landing fees. For airlines still recovering from the pandemic losses, this adds massive financial strain. While passengers may face a delay, but real burden cabin crew के ऊपर आता है for longer working hours. And longer working hours का मतलब है disturbed sleep cycles, disturbed meal breaks, jet lag recovery time, and overall mental well-being. Cabin crew एक rotating schedule पे होता है और heavily rely करता है on rest between flights. But delays और extended routes की वजह से cabin crew का working time बढ़ जाता है. Over time, this leads to physical burnout and health risk. Moreover, एक airline के लिए scheduling their cabin crew becomes very difficult. Crew replacement, adjusted rosters, and backup planning becomes daily challenges. ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है. 2019 में पुलवामा इंसिडेंट के बाद भी 140 दिनों के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था. And with current geopolitical tensions, such actions could continue. So, what's the way forward? Until diplomatic channels reopen this airspace, airlines and crew will continue bearing the brunt of geopolitical decisions they have no control over. It's a powerful reminder that aviation is not just about flying from point A to point B. It's a complex web of diplomacy, safety, and human endurance. So this brings us to the end of our video. If you have liked the efforts, please like, subscribe, and share. And remember, next time your flight takes longer than expected or you hear about a refueling stop, it's not just a delay. It's the result of international tensions, longer flying hours, and the resilience of cabin crew making sure you get home safe. Until next time, it's bye-bye.